जय श्री माता जी. எல்லோருக்கும் வணக்கம். நம்ம எல்லோரும் ஸ்ரத்தா பக்தி சமர்ப்பண பாவத்தோடு ஸ்ரீ மாதாஜிக்கு நமஸ்காரம் பண்ணி மெதுவாக குண்டலினி உயர்த்தி பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம். சந்தோஷ சித்தத்தோடு குழந்தை நிலையில் மிகவும் அன்போடு ஸ்ரீ மாதாஜியை பார்ப்போம். வலது கை ஹிருதயத்தில் வைத்து மிகவும் அன்போடு முழு மரியாதையோடு ஸ்ரீ மாதாஜியை நம்முடைய ஹிருதயத்தில் அழைப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதா, தயவு செய்து எங்களுடைய ஹிருதயத்துக்குள் வாருங்கள். தங்களுடைய அன்பும் கருணையாலும் எங்களுடைய ஹிருதயத்தை நிரப்பி விடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுடைய ஹிருதயத்தில் அமருங்கள். ஹிருதேஸ்வரி சாட்சி ஸ்வரூபிணியாக எங்களுடைய ஹிருதயத்தில் அமர்ந்து இன்றைய தியானத்துக்கு அனுமதி தந்து வழி நடத்துங்கள். மெதுவாக வலது கை மடக்கி கொண்டு வருவோம். கண்களை மெதுவாக மூடி ஸ்ரீ மாதாஜியோட வருகையை உணர முயற்சிப்போம். நுண்ணதிர்கள் உணருமான் கவனிப்போம். இரண்டு உள்ளங்கையும் சஹஸ்ராரத்தில் கவனத்தை வைத்து மூன்று மகாமந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै
नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्रीसहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीगणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। இரண்டு கைகளும் பூமி தாய் மீது வைப்போம். ஆதி பூமி மாதா சாட்சாத் மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदि भूमि माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री माता जी श्री आदि भूमि माता தயவு செய்து எங்களுடைய ஸ்தூல சரீரமும் சூக்ஷ்ம சரீரத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள். பொறுமையும் சகிப்புத்தன்மையும் தந்தருளுங்கள் தாயே. கவனம் இரண்டு உள்ளங்கையும் சஹஸ்ராரத்தில் வைத்து தூய்மை அடைய காத்திருப்போம். இடா நாடியை தூய்மைப்படுத்துவோம். இடது கை மடி மீது, வலது கை பூமி தாய் மீது இருக்கட்டும். கவனம் இடா நாடி. இடது மூலாதார சக்கரத்திலிருந்து இடது பக்கமா மேல் நோக்கி நெத்தி பகுதியில் வரும்போது கிராஸ் ஆகி வலது காதுக்கும் மேலே போய் முடிகிற இடா நாடி மீது வைப்போம். श्री महाकाली साक्षात श्री भैरवनाथ साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महाकाली साक्षात् श्री भैरवनाथ साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री माता जी श्री इडानाडी स्वामिनी தயவு செய்து எங்களுடைய இடா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். சுத்த இச்சா சக்தியை தந்தருளுங்கள் தாயே. ஒரு நல்ல சகஜ யோகியா இருப்பதே எங்களுடைய சுத்த இச்சை. பரமாத்மாவோட ஒன்றினை அடைவதே எங்களுடைய சுத்த இச்சை. அது திருடமாக தீவிரமாக தந்தருளுங்கள்.
பிங்களா நாடியை தூய்மைப்படுத்துவோம். வலது கை மடி மீது, இடது கை ஆகாயத்தை நோக்கி வைப்போம். கவனம் பிங்களா நாடி. சுவாதிஷ்டான சக்கரத்திலிருந்து ஆரம்பிச்சு வலது பக்கமா மேல் நோக்கி நெத்தி பகுதியில் வரும்போது கிராஸ் ஆகி இடது காதுக்கு மேலே போய் முடியும். பிங்களா நாடி மீது வைப்போம். श्री महासरस्वती साक्षात श्री हनुमान साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महासरस्वती साक्षात् श्री हनुमान साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री माताजी, श्री पिंगला नाडी स्वामिनी, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ காரியசக்தி சுவாமினி, தயவு செய்து எங்களுக்கு சுத்த காரிய சக்தியை தந்தருளுங்கள். சஹஜ காரிய சக்தியை தந்தருளுங்கள் தாயே. மெதுவாக இடது கை மடிக்கை கொண்டு வருவோம். இரண்டு கைகளும் மடி மீது. கவனம் சுஷும்னா நாடி. நேரா உட்காந்துப்போம். श्री महालक्ष्मी साक्षात श्री गणेशा साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी साक्षात् श्री गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री माताजी, श्री सुषुम्ना नाडी स्वामिनी, தயவு செய்து எங்களுக்கு சுத்த ஞானத்தை தந்தருளுங்கள் தாயே. தெய்வீக ஞானத்தை தந்தருளுங்கள். எங்களுடைய சுத்த இச்சையை செயலில் கொண்டு வர தெய்வீக ஞானத்தை தந்தருளுங்கள். அதற்கு தேவையான சமநிலையை தந்தருளுங்கள். கவனத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள். எங்களுடைய கவனத்தை நிகழ்காலத்தில் தியான நிலையில் நிலை நிறுத்துங்கள் தாயே. எல்லா மங்களமும் பெற சுத்த ஞானத்தை தந்தருளுங்கள்.
மெதுவாக நம்முடைய கவனம் மூலாதார சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை நிலைநிறுத்தி செயல்படுத்துங்கள். தூய்மையும் மங்களத்தோடு நிரப்பிவிடுங்கள் தாயே. श्री गणेश अथर्वशीर्षे पूर्व ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं हृदं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं मामवक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोद्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्त तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋतम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैर्सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टयाद्धौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो रात्रपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय
श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। மெதுவாக நம்முடைய கவனம் மூலாதாரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ குண்டலினி கௌரி மாதா மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री कुण्डलिनी गौरी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக ஒவ்வொரு சக்கரங்களையும் கடந்து நம்முடைய கவனம் ஹிருதயத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சிவ பார்வதி, ஸ்ரீ சீதாராமா, ஸ்ரீ துர்கா மாதா, ஸ்ரீ ஜெகதம்பா, தயவு செய்து எங்களுடைய ஹிருதயத்துக்குள் வாருங்கள். தங்களுடைய எல்லா குணங்களும் சக்திகளையும் எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் தாயே. கவனம் நடு ஹிருதயத்தில் வைத்து தேவி சூக்தத்தை கூறுவோம். नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणतास्मतां रौद्रायै नमो नित्यायै गौरी धात्र्यै नमो नमः। ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः। कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कूर्मो नमो नमः। नैनृत्यै भूभृतां लक्ष्मी शर्वाण्यै ते नमो नमः। दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः। अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु
शान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः। चितिरूपेण या कृत्स्नत् मेतत् व्याप्य स्थिता जगत्। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंशयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता। करोतु सा न शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि विहन्तु चापदः। या साम्प्रतं चोददैत्यतापितै अस्माभिरीशा च सुरैः नमस्यते। या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக கவனம் ஆக்ஞா சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி ஸ்ரீ ஆக்ஞா சக்கர சுவாமினி தயவு செய்து எங்களுக்கு மன்னிக்கும் சுபாவத்தை தந்தருளுங்கள். எங்களுக்குள் உள்ள அகங்காரம் மமகாரம் தேவையற்ற கட்டுப்பாடுகளை முழுமையாக நீக்கிவிடுங்க தாயே. மெதுவாக கவனம் சகசிராரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி
सहस्रार स्वामिनी, सहज योग प्रदायिनी, आदिशक्ति श्री माता जी தயவு செய்து எங்களுடைய சஹஸ்ராரத்துக்குள் வாருங்கள். தங்களுடைய திருக்கமல பாதத்தை எங்களுடைய சஹஸ்ராரத்தில் பதித்து வைங்க தாயி. எங்களுக்கு தியான நிலைக்கு கொண்டு செல்லுங்க. சகல சௌபாகியமும் தந்தருளுங்க தாயே. நம்முடைய முழு கவனம் சஹஸ்ராரத்து ஸ்ரீ மாதாவோட திருக்கமல பாதம். அமைதியாக சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. கண்களை திறந்து ஸ்ரீ மாதாஜி சொற்பொழிவை கேட்போம். Today, in the land of Sri Krishna, we are celebrating the birthday of Sri Ganesh. It's something very unprecedented and of a very significant value that you should be celebrating the birthday of Sri Krishna's son in his own land. You know that Sri Ganesha incarnated on this earth as Mahavishnu, and he was the son of Radha, who incarnated as Lord Jesus Christ. So by celebrating this birthday, today you are recognizing the greatest truth that Lord Jesus Christ
was the son of Sri Krishna. There's a story about it if you read in the Devi Mahatmya. How this primordial child took a form of an egg and half of it remained as Sri Ganesha and half of it became Mahavishnu. In the evolutionary process, all these happenings of the antiquities have been recorded. But today, I feel so gratified that on the human level, people have understood. Christ is the incarnation of Lord Ganesha. He is the eternal child. But in the form when he came as Christ, he came as the son of Sri Krishna. But when Parvati made Sri Ganesha, he was the son of Parvati alone. There was no father. Parvati herself wanted to have a child of her own. They were angels who were dedicated either to Vishnu or to Shiva, like Ganas, were dedicated to Shiva alone. So she wanted to have her own son who can permeate her powers on this earth. So to begin with, when the Shakti created this universe and Sadashiva was watching her creation, the first thing she created on this earth was innocence. And the embodiment of that innocence was Sri Ganesh. The whole universe was covered with innocence, which we call as Omkar. This innocence protected all the creation of the world and penetrated into all that is matter. Matter is innocent. If you hit the matter, it will hit you back because it is built like that. It doesn't want to harm you by any method, except that if you try to hit it, it hits you back in its own nature. So it was called as Jada, the one that acts according to the built-in nature. Innocence in the animals is of another kind, where the animals do not know that they are committing crimes. Animals
when they say kill an animal, another animal, or trespass your properties, create nuisance all over, they don't know they are committing a sin or they are disobeying some laws. They live with the laws that are built within them. That's why they are called as pashus, means bondage, the pasha. Pasha means the bondage. They are under the bondage of the laws of God. Sri Shiva is called as Pashupati. Up to that stage, the innocence remains intact. Because there is no development of ego in them. So they are innocent. A tiger may eat a cow, still he is innocent. Or an elephant may trample over a human body, still he is innocent. But when going to a higher state, the Mother Shakti, the primordial mother, thought of creating a personality who will protect the innocence of human beings. Above the matter, above the animals, she created Sri Ganesha. And you know the story of Sri Ganesha, how he got the head of an elephant, symbolizing that Sri Ganesha, though he is a human being, he is like an animal as far as his head is concerned, that too of Sri Gajanana, in the sense that he has got the head of an elephant, which is the wisest animal in the animal kingdom. So, in such a head which is innocent, ego cannot develop. There is no ego. It's an egoless state. But human beings were created in a different manner, and when carbon was placed to create the amino acids, it also set in motion a new type of evolution in human beings, that at the Vishuddhi level, human beings raised their heads like this. Animals' heads are on the ground. So the energy flows downward into Mother Earth. But when man raised his head above against the energy of gravity, then a new complication started in the energy flow. And that is how at the Vishuddhi a problem started where Kundalini could not nourish or look after that problematic Vishuddhi. The reason is, when you raise your head from the Mother Earth, you remove yourself away from the natural power of Mother Earth. When you take your Vishuddhi upward like that,
see the result of that in this country, which is the country of Vishuddhi Chakra. That you started going to machines which are against nature, extracting the nature, disturbing the nature by creating atomic bombs, by changing the atom, breaking it. That means you went against the nature itself by raising your head. But if it was done in complete surrender to God, with your bent head towards the Mother Earth, it would not have harmed. But when you completely cut off yourself from that nature, which is so bountiful, which is so gracious. Yesterday you saw the beautiful pictures of the nature that surrounds you in this country. Such a rich country like America, without any gratitude towards its creator, raised its head upward. That's how the Vishuddhi problem started coming up. In every walk of life, the whole social structure was built up to fight the nature, not to go along with the nature. So the first attack came on the innocence itself, on the Muladhara itself. So the natural ways of Muladhara were given up. Marriage system has been here much before Christ, much before Abraham, much before Moses. And a sanctified marriage which was blessed by the society was acceptable since long. But man in his arrogance raised his voice against the marriage, against the natural way of leading a life of sanity. If it was natural to be the way people lead their private life, why do they get all kinds of diseases? If you are a natural person, you don't get any diseases. Because you are anti-nature, that's why. In this country, how many men and women were murdered for jealousy? If it was natural to be in love with 10 men and 10 women, then why jealousy? You should be happy, it's very natural. Because the head was raised at Vishuddhi Chakra, without surrendering to Sri Krishna, anti-life, antibiotic atmosphere started growing. And this kind of life has taken this great country now to the brink of complete destruction.
The attack of innocence is the greatest weakness of this country. Not to value the power of chastity and a chaste life is the biggest mistake that was created by the people who started all kinds of trends and fads. Ganesha is the root of creation. When you go against Sri Ganesh, you start losing your roots. You have no roots at all. Then you get drifted into anything stupid, anything new that comes up. So much so that a person like Freud was worshipped and they forgot Christ, who said, "Thou shalt not have adulterous eyes." Ganesha to that level that even the eyes have to be innocent. There should be no lust in your eyes. But arrogance made them feel, what's wrong? What's wrong in this? What's wrong in this? Now the whole country is facing a great crisis because of arrogant enterprises. Still, they make a martyrdom out of all that is destructive. It's a very great responsibility on the Sahajogis who live on the line of Sri Ganesh. But for the people who live in the land of Sri Krishna, the responsibility is absolutely on your neck. And you can't get out of it. Unless and until you understand the importance of innocence in your life. You cannot save this country, whatever I may try to do for it. It's only you who are going to save it. It's only you who are going to make it. When the Kundalini rises, Sri Ganesha is awakened in you. The Ganesha whom you never respected slowly comes up from his slumber, out of the hurt and the injuries inflicted on him. Still he stands up, but still weak. How are we going to nourish it? How are we going to look after its growth? The responsibility of Sahajogis of America is very great. They cannot cheat anymore themselves. They cannot be satisfied with their arrogance. The mistakes have been grievous. So you have to take it up as a crusade against those mistakes and to establish your Sri Ganesh in a full form so that he gives you the necessary balance
and the roots to nourish yourself. It is shocking first. You just can't understand. It is impossible to see how you could accept such absurd ideas. How you could take to such funny things which are obviously horrid. Are we not aware of certain words like prostitution and all other dirty words that they use, which I don't want to say just now? Or they have lost their meanings. We were all aware of it. We all knew about it. Don't do that. Stay. You should not. When I'm speaking, you must keep quiet, all right? Have we lost all wisdom from our minds that we cannot see what we have done to ourselves? We have no self-respect. Arrogance to that limit is very dangerous, extremely unpredictable. And God knows what can come through with all these ventures we have gone into. I would say for Sahajogis, I have given some instructions with people how they should respect their privacy of life. Especially the women of America. If they have to be the Shaktis, they have to respect themselves, their chastity. But so surprising that when we see outside all these things happening, even after coming to Sahaja Yoga, some of us try to be one of them who are going to hell. If you have to save them, then try to fix your positions properly. Sri Ganesha has 4 hands. And the hand that carries the destructive weapon of Parasha is the one you have to be careful about. That is his job. And if you neglect him, that force will act. And act so vehemently that despite your realization, you may not be able to save yourself. Do not take your realization for granted. Unless and until your Ganesha is settled, your realization has no meaning at all. Watch yourself. Have you got adulterous eyes? Have you got an adulterous mind? What is your expectation about Sahaja Yoga? So many think that in Sahaja Yoga
God blesses you, then you must get a good amount of health, money, and position, power. The first thing you must ask for is the pure Ganesha, Nirmal Ganesha. Oh Mother, please give us the blessings of establishment of purity in our Ganesh principle. In relationships, in attitudes, in behavior, try to judge yourself. Are you innocent? Christ has said, anything against him may be tolerated, but nothing against the Adishakti. But I must tell you as your mother, it's not true. Maybe against me some things may be tolerated, but nothing against Christ the Lord. Nothing against Lord Ganesha. Everything that is done against him after realization will tell upon you, and you will be thrown out of the realm of God as absolutely degraded people. That is one thing that will not be tolerated, will not be forgiven, will never be accepted. Whatever you have done in the past is finished now because you are a new bird. But after becoming this, if you try to take to these wrong ideas or to indulge into them, I cannot help you at all. After all, Sri Ganesha is my son. Because he is pure. जय श्री माता जी। कनगल मूड़ी शरणम ध्यान तिलक
ஜெய் ஸ்ரீமாதாஜி. கண்களை திறந்து ஸ்ரீ மாதாஜிக்கு நன்றியை கூறி நமஸ்காரம் பண்ணி குண்டலினி உயர்த்தி மண்டல் போட்டுக்கொண்டோம்.